आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना आनी दाळ उत्पादनांत आत्मनिर्भरता मिशन सारख्या येवजण्यांक लागून देशांतल्या लाखांनी शेतकारांचें भविष्य बदलतलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या इश्कोलांक प्रवेश आनी परीक्षा शुल्क एकठांय करपा खातीर युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आपणावपाचें आवाहन केलां। राष्ट्रीय महिला आयोगान दुर्गापूर वैजकीय विद्यार्थिनीच्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणांत अस्तंत बंगाल पुलिसांकडल्यान 5 दिसां भितर अहवाल मागला। ICC बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकांत आज दनपारां विशाखापट्टणमांत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना आनी दाळ उत्पादनांत आत्मनिर्भरता मिशन सारख्या येवजण्यांक लागून देशांतल्या लाखांनी शेतकारांचें भविष्य बदलतलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। ह्यो येवजण्यो आत्मनिर्भरता ग्रामीण सक्षमीकरण आनी कृषी नवोपक्रमांचो एक नवो अध्याय सुरू करतल्यो अशें तांणी सांगलें। देशाचे शेती वेवस्थेत नेटान उदरगत आनी सुदारणा साध्य करपाची गरज तांणी अधोरेखीत केली। प्रधानमंत्री काल नवी दिल्लीन 42,000 कोटी रुपया मायज मोलाच्या साबार प्रकल्प आनी येवजण्यांचें उक्तावण करतकच आनी बुन्यादी फातर घाल्या उपरांत उलयताले। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, देशांत 6 नव्यो फर्टिलायझर कंपनी स्थापन केल्या। फाटल्या 11 वर्सांत शेतकारांक 25 कोटी सॉयल भलायकी कार्डां वांटल्यात। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। ह्या वेळार उलयतना शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें, फुडल्या पिळगेंतल्या GST सुदारणा सयत शेती उपकरणाचेर GSTचे दर उणे करून सरकारान शेतकारांक थाकाय दिल्या। प्रधानमंत्र्यांनी सदांच शेतकारांच्या हिताक सगळ्यांत चड प्राधान्य दिलां अशें तांणी म्हळें। अमेरिकेचे भारतांतले नियोजीत राजदूत सर्जिओ गौर हांणी काल नवी दिल्लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तांच्या घरा भेट घेतली। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मोदी हांणी सर्जिओ गौर हांच्या कार्यकाळान भारत अमेरिका व्यापक जागतीक धोरणात्मक भागीदारी आनीक घटमूट जातली असो विश्वास उक्तायला। त्या आदीं परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीन अमेरिकेचे भारतांतले नियोजीत राजदूत सर्जिओ गौर हांचे कडेन भारत अमेरिका संबंद आनी ताचे जागतीक म्हत्व हाचेर चर्चा केली। सोशल मिडिया पोस्टान डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें की तांणी गौर हांकां तांच्या नव्या जापसालदारके खातीर शुभेच्छा दिल्या। तशेंच परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री अमेरिकेच्या भारतांतले नियोजीत राजदूतांक मेळून तांच्या कार्यकाळा खातीर येस मेळचे अशी शुभेच्छा दिली। भारत अमेरिका व्यापक जागतीक धोरणात्मक भागीदारी आनी ताचे सामायिक प्राधान्याचेर तांच्या मदीं फलदायी चर्चा जाल्ल्याचें परराष्ट्र मंत्रालयान म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लीन एन्थ्रोपिक कंपनीचे CEO डारियो अमोदे हांची भेट घेतली। सोशल मिडिया पोस्टान मोदी हांणी एन्थ्रोपिकाच्या विस्ताराक येवकार दिलो। भारताची चैतन्यशील तंत्रज्ञान परिसंस्था आनी प्रतिभावान तरणाटे मनीस केंद्रीत आनी जापसालदार आशिल्ल्या AI नवनिर्माणाक चालना दितात अशें मोदी हांणी सांगलें। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या इश्कोलांक प्रवेश आनी परीक्षा शुल्क एकठांय करपा खातीर युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आपणावपाचें आवाहन केलां। प्रशासकीय प्रक्रियांचें आधुनिकीकरण करपाच्या उद्देशान हें पावल उबारलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं
वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। बिहार विधानसभा वेंचणुके राजकीय हालचालींक नेट आयला। एनडीएन ग्रँड अलायन्सांतले घटक पक्ष जागे वांटपाचो फॉर्म्युला निश्चित करपा खातीर बसका घेतात। भाजप कोर समितीची बसका काल नवी दिल्लींतल्या पक्ष अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांच्या घरा जाली। ह्या बसके वेळार केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आनी भाजपचे हेर वरिश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले। दुसरे वटेन ग्रँड अलायन्साचे घटक पक्षूय जागे वांटपाचो प्रश्न सोडोवपाचे दिकेन वाटचाल करतात। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाक भेट दिवन नव्यान बांदिल्ल्या यात्री सुविधा केंद्राची पळोवणी केली। पत्रकारां कडेन उलयतना वैष्णव हांणी सांगलें, प्रवाशांची हालचाल सुरळीत जावची म्हणून यात्री सुविधा केंद्र बांदलां आनी ताका लागून स्टेशन भोंवतणी गर्दी उणी करपाक मदत जातली। तांणी सांगलें, प्रवाशांक सहज तिकेट घेवपाक मेळची म्हूण स्टेशना भितर आशिल्ले सगळे तिकेट काउंटर ह्या केंद्रांत स्थलांतरीत केल्यात। यहाँ पर बहुत अच्छी टॉयलेट्स की व्यवस्था है, करीब 150 से अधिक मेल टॉयलेट्स, 150 से अधिक फीमेल टॉयलेट्स, प्योरीफाइड पानी, वो सब की व्यवस्था की गई, अच्छे फैंस की व्यवस्था की गई। बड़ा एरिया एक हो गया है जिससे कि आके आराम से यहाँ पे वेट कर सके। अंदर के जितने टिकटिंग के काउंटर्स हैं उन काउंटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत सारी ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई है। अस्तंत बंगालांत दुर्गापूरच्या खाजगी वैजकी महाविद्यालयांत शिकपी ओडिसाच्या विद्यार्थिनीचेर कथीतरित्या 3 जाणांनी सामुहीक बलात्कार केल्ल्याचो आरोप आसा। पिडितेच्या आवय बापायन एफआयआर केल्या उपरांत पुलिसांनी एकल्याक ताब्यात घेतला। ही घडणूक कथीतरित्या शुक्रारा सांजवेळा महाविद्यालयाच्या कॅम्पसा लागसार घडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। ओडिसाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांकां गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाचें आवाहन केलां। ओडिसाच्या जलेश्वर शारांत रावपी पिडितेचेर कॉलेजच्या इस्पितळांत उपचार सुरू आसा आनी तिणें पुलिसांक आपलो स्टेटमेंट दिला। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यूच्यो अध्यक्षा विजया रहाटकर हांणी अस्तंत बंगालाच्या डीजीपीक पत्र बरोवन आरोपींक बेगोबेग अटक करपाची मागणी केल्या। आयोगान ह्या प्रकरणात अस्तंत बंगाल पुलिसां कडल्यान 5 दिसां भितर अहवाल मागला। कॅनडाच्यो परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद आयच्यान 17 ऑक्टोबर मेरेन भारत, सिंगापोर, चीन ह्या देशांक भेट दितली। कॅनडाच्या इंडो पॅसिफीक रणनितीचो एक भाग म्हणून ह्या देशाकडेन द्विपक्षीय संबंध आनी सहकार्याक चालना दिवप हो ह्या भेटीचो हेत आसा। भारत भेटी वेळार अनिता आनंद नवी दिल्लींत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आनी वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांचे बरोबर बसका घेतली। वेपार, विविधताय, उर्जा संक्रमण आनी सुरक्षा मुद्द्या सयत रणनीतीक सहकार्याची चौकट मुखार व्हरपाची चर्चा जातली। दिल्ली व्यतिरिक्त आनंद कॅनडा आनी भारत ह्या दोनूय देशांनी गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आनी आर्थीक संदींक चालना दिवपी कॅनेडियन आनी भारतीय वेवसायां कडेन संवाद सादपा खातीर मुंबयक वतल्यो अशें प्रसिद्धी पत्रांत म्हळां। केरला, माहे, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलांत आज कांय सुवातींनी उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आज आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटकांतलो दर्यादेगेवेलो वाठार, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिसा आनी दक्षिण आंतरीक कर्नाटकांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला। आयसीसी बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकांत आज विशाखापट्टणमांत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो। ही मॅच दनपारां 3 उपरांत सुरू जातली। काल राती कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत इंग्लंडान श्रीलंकेक 89 धांवड्यांनी हारयलो। 254 धांवड्याच्या लक्ष्याचो फाटलाव करपी श्रीलंका पंगडान 45.4 ओव्हरींनी 164 धांवड्यो केल्यो। हाचे आदीं श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाची निवड केली। पयलीं फलंदाजी करपी इंग्लंडान निर्धारीत 50 ओव्हरींनी 9 बाद 253 धांवड्यो केल्यो। कर्णधार नॅट सायवर ब्रंट हाणें 117 धांवड्याची शानदार खेळी करत इंग्लंडाक एक बरी धावसंख्या उबारपाक मदत केली। नॅट स्किवर ब्रंट हाका प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणून जाहीर केलें। निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना आनी दाळ उत्पादनांत आत्मनिर्भरता मिशन सारख्या येवजण्यांक लागून देशांतल्या लाखांनी शेतकारांचें भविश्य बदलतलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। राष्ट्रीय महिला आयोगान दुर्गापूर वैजकीय विद्यार्थिनीच्या सामुहीक बलात्कार प्रकरणांत अस्तंत बंगाल पुलिसां कडल्यान 5 दिसां भितर अहवाल मागला। आयसीसी बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकांत आज दनपारां विशाखापट्टणमांत भारत ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30।